guys, you must be thinking, what the hell am I doing here sitting on my kitchen slab? But I'll be a little quiet. It's 12 in the night and I'm craving for my favorite dessert. I'm sorry, I am not at all dressed according to the YouTube standard, but who cares? I know that I don't fit in that category. But yeah, all my friends always ask me that why don't you bake on your channel, because you are so good with baking and all. But guys, trust me, I'm not at all good with baking. It's just hit and trial, what I always do. And I'm gonna bake my favorite dessert. It's super quick. You can make this any time of the day, but I usually make this when I'm craving something sweet and I don't have much of the time. You can see it's 12 in the night and I want to make something super quick because Shivit is sleeping in the next room and I want to be very quiet. So let's get started. This is the most unhealthy dessert, guys. Please, अगर वो साउथ दिल्ली की आंटीज की तरह हूँ कि 8 बजे के बाद कार्ब्स नहीं खाना और वो सब नहीं करना, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है. चले जाओ, इस खिड़की से बाहर जाओ. But let's get started. You'll be needing some sugar. This is the brown sugar. You will need some butter, yellow butter. Amul butter will go perfectly fine with this. Some bread and cinnamon. That's it, guys. You don't need anything else. This is a super quick dessert और ये मेरा बहुत फेवरेट है. मुझे जब भी 12 बजे या 1 बजे के टाइम पे कुछ ऐसी क्रेविंग हो रही होती है कि कुछ खाना है बट कुछ भी नहीं होता, I quickly make this and it tastes yum. So सबसे पहले क्या करेंगे, मैं सारे काम ऐसे ही बैठ कर करूँगी स्लैब के ऊपर, क्योंकि वो क्या घर ही तो है. मैं 2 ब्रेड स्लाइसेस लूँगी, 2 ब्रेड स्लाइसेस. और क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से बटर लगाना है. बटर कैसे लगाना है, जैसे आप अपनी बॉस को लगाते हो ना, बिल्कुल वैसे अच्छे से लगाएं इसके ऊपर बटर. और दोनों ब्रेड्स के ऊपर मैं अच्छे से बटर लगा लेंगे. मैंने दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे अच्छे से बटर लगा लिया है. अब क्या करना है, टेक योर शुगर. दिस इज ब्राउन वन एंड इट्स डेमेरारा शुगर. एंड शुगर भी अच्छे से लगा लो, जैसे शुगर उतनी ही लगाओ जितना मीठा पसंद है, वरना मीठे बन जाओगे और किसी को नहीं चाहिए ऐसा कुछ. ओके, it already looks so nice. So I've just buttered the bread and some brown sugar. Now be generous with cinnamon. I love cinnamon, and this toast tastes yum with lots of cinnamon. So I'll be generous with the cinnamon. I have already preheated the oven at 180, so this will go in the oven. That's it, guys. It's so easy and it tastes super duper yum. I'm sorry, guys, I not at all look good or anything in this video, but yeah, this is how I am. But please do try this dessert. I love this one when I'm craving something really sweet and I don't have time, or I don't have much of the ingredients to make anything else. This is मुझे ना इसके ऊपर कॉपीराइट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मैंने बनाया है और कहीं नहीं है. ये कोई तरला दलाल, कोई संजीव कपूर, कोई जेमी ओलिवर, किसी की प्रिपरेशन नहीं है. इट्स मी. सो दिस विल गो इन द ओवन फॉर 15 या 20 मिनट्स. डिपेंड्स कि कितना क्रिस्पी आपको पसंद है, कितना लाइफ में तड़का पसंद है, उसी हिसाब से करना इसको. ये उतना ही क्रिस्पी अच्छा लगेगा. मैं 15-20 मिनट्स के लिए करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्रिस्पी तड़का लाइफ में. बट आई विल बी बैक. मीनवाइल जस्ट डांस. I'm halfway through it. You need to try this dessert and let me know how this amazing stuff is. Do you want to hear the sound? Look how crispy this is. This is
the most up close and personal, but what am I even doing? OMG. This is, guys, you need to try this and let me know how this turned out. But ये बहुत ही ज़्यादा यम है. Bye guys, I love you. I hope you like this video. Please give it a thumbs up. Subscribe to my channel, please, and enjoy it with a cold milk or with ice cream. जो मन करे.